Good evening, everyone. Good evening, sir. Good Good evening, sir. evening. Good evening. Chalo. Welcome to a very interesting session because from today onwards, we'll be meeting live on a daily basis, except for tomorrow, where I'll tell you what the agenda of these sessions is going to be. You know how your SBL paper is, or even if you don't know how the paper is going to be, these sessions will give you an understanding of what exactly to expect in the SBL paper. Point one. Point two, how should you, first of all, make notes when you are going through the pre-scene? Then we'll also understand how to frame answers to every single question that can be asked in the SBL exam. Like I told you, there will be three sessions, or rather, not three sessions. We'll be solving three papers together. Okay, and how exactly are we going to solve these papers? Step one, whenever a particular question or a case study was asked in a certain exam, at that point in time, there was a pre-scene that came out. So we'll first of all analyze the pre-scene. Once we have analyzed the pre-scene, we'll take that, we'll go through the exhibits. ठीक है. Once we have gone through the exhibits, then we'll attempt solving the questions. Now, for the first mock that we solve, or the first paper that we solve together, it will take us slightly longer. Then after that, as time passes by, the time commitment in the session will go down because you will also start getting a hang of it. Today I'll be analyzing a pre-scene for a question called Corjetz company. ठीक है. आज मैं सिर्फ pre-scene analysis करूंगा आपके साथ, and this pre-scene analysis will help you get rid of one major fear that all of you have कि I don't know what is going to be asked in the paper. So let this be a starting point for you to understand कि पेपर में क्या क्या आ सकता है, या what kind of background information is given to you, and how little you need to rely on models or other areas. Then once we have finished writing answers to one entire question, after that, we'll be going to one critical ACCA resource which is called Reading the Mind of the SBL Marker. ठीक है, उसमें हम पूरा समझेंगे कि ACCA where does it allocate marks and where does it deduct marks. तो वो एक अपने पास अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा. इट विल टेक अस वन फुल वीक बाय द वे टू डू दिस एक्टिविटी. ये एक दिन का काम नहीं है. दिस इज गोइंग टू टेक अस आज से लेके फ्राइडे तक. लाइक पूरा एनालाइजिंग अ पेपर इन एवरी फ्रॉम एवरी पॉसिबल एंगल. उसके बाद सैटरडे को आई विल गिव यू अ मॉक. ठीक है, वो मॉक आपको कैसे सॉल्व करना है? आई वॉन्ट यू टू टेक एज मेनी आवर्स एज यू wish to take. Don't put yourself with that 3 hour 15 minute ka time frame. Take as many hours as you want and sit with an open book. I don't want you to quote things from memory. I want you to sit with an open book and frame answers basis what we have studied from 10th of November to 14th of November. 15th को मैं आपको एक टेस्ट दूंगा which you have to give me by 16th. 16th या 17th तक आपको मुझे वो एक टेस्ट देना है. I want you to A, not keep the 3 hour 15 minute timeline. B, open the study hub and then write the answer. I want you to take that liberty. उसके बाद we'll be doing two more past exam questions, as in two more past papers, and which will be followed by on 20th of November we'll be analyzing December 2025 का प्री सीन. ठीक है, पूरा दिन हम बैठेंगे फ्रॉम 10:30 इन द मॉर्निंग टू 5:30 इन द इवनिंग है, जितना भी टाइम लगता है उसके लिए. डोंट वरी, वील सिट फॉर द एंटायर डे. वील ब्रेक डाउन द एंटायर प्री सीन. आपको आज दिखेगा कि मैं प्री सीन को कैसे ब्रेक डाउन करता हूँ. हाउ वी यूज दैट टू प्रेडिक्ट possible questions that can be tested in the paper. And then again, there will be two more mocks and then other technical articles and answer writing assistance that you need. ठीक है, तो आज से लेके 30th नवंबर तक, 30th 29th नवंबर, meet you every day except for tomorrow. ठीक है, and that's the plan. So I want all your attention on screen. I'm picking up a very I'm picking up a question from the exam kit that has been shared on the group. In case you don't have that exam kit, no problem. I will resend it on the group. Shreya, can you do one thing? Can you just, the 25-26 exam kit that was shared once, right? Can you resend it on the group right now so that everyone can see that?
ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि ये एसबीएल पेपर में हैव आई स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग, यस, अदरवाइज पूरा वेस्ट हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड एसबीएल पेपर आता कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन, सो 2 weeks बिफोर योर एसबीएल पेपर, एसबीएल इज ऑन 2nd of December, राइट? उसके 2 week पहले एसीसीए रिलीजेस समथिंग विच इज नोन एज द प्री सीन मटीरियल। अर्लियर व्हेन द एसबीएल एग्जाम वाज लॉन्च्ड इट वाज अ 4 hour एग्जाम, ठीक है, जिसमें दुनिया भर का स्टोरी होता था 50 पन्ने का, एंड देन यू हैड टू फ्रेम आंसर्स। नाउ व्हाट दे डू इज दे सिलेक्ट सम इंडस्ट्री, जैसे लास्ट अटेम्प्ट में मील किट बॉक्सेस वाला इंडस्ट्री था, उसके पहले मैन्युफैक्चरिंग था, उसके पहले चैरिटी था। सो दे विल पिक अप वन इंडस्ट्री। जैसे इस अटेम्प्ट में फॉर एग्जांपल दे टेक अप द कोचिंग इंडस्ट्री, तो देर इज अ 4-5 पेज इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री की भाई एसीसीए कोचिंग इंडस्ट्री का टोटल मार्केट साइज इतना है, देर आर सो मेनी पीपल प्रेजेंट एंड सो मेनी प्लेयर्स, पूरा पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा, कंपेटिटर नॉलेज रहेगा, सारा कुछ। उसके बाद दे गिव यू कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कि देर इज अ कंपनी कॉल्ड Satyamed Nandedkar coaching classes, for example. Okay. That is the second piece of information that is given to you. Okay. And uske baad, so this is what you get on 18th of November. 1 week from now, you will get this pre-scene material. हम उसको 19th या 20th को पूरा दिन बैठ के we'll sit down and analyze that. And what we'll do is we'll predict certain, we see we cannot predict questions। उससे क्या प्रॉब्लम होता है, योर माइंड गेट स्लॉटेड इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली कि यही होगा। व्हाट इफ समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट कम्स? सो व्हाट वील बी डूइंग इज वील बी मैपिंग द प्री सीन मटीरियल टू सिलेबस एरियाज। रिस्क रजिस्टर हो गया, ई बिजनेसेस हो गया, रिस्क हीट मैप हो गया, राइट? यू हैव ऑल ऑफ दीज रिकॉर्डिंग्स बाय द वे ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो हम उसको एक एक सिलेबस एरिया के साथ मैप करेंगे, एंड वील मेक अ फ्रेमवर्क कि यार पेपर में ये हो सकता है, ठीक है। देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्री सीन आई गिव यू वन मॉक, वो सेपरेट पार्ट हो गया। बट प्री सीन एनालिसिस इज अराउंड 25% क्रिटिकल फॉर आंसरिंग द फाइनल पेपर। जो पेपर में क्वेश्चंस आने वाला है, मोस्ट ऑफ द आंसर्स कैन बी फ्रेम्ड यूजिंग द एग्जिबिट, वेरी लेस रिलायंस ऑन प्री सीन। आई नो यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव। आप जब पेपर से बाहर निकलोगे, आप सामने से मुझे मैसेज करो कि नहीं, वॉट यू आर सेइंग इज राइट, बट आई नो ऐसे तो विश्वास, यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव। आप मेरा प्री सीन देखोगे, आप और 50 लोगों का देखोगे, देख लो। Even if I say you are not going to stop, so I'm not even going to say कि don't look at other material. What I'm saying is, when you write the paper, you will realize कि only 20 to 25% reliance was on the pre-seen material. Everything else was from the exhibit only. ठीक है। देर आर 3 exhibits गिवन टू यू, वो देखेंगे हम कैसे करना है। टुडेज क्वेश्चन इज कोरजेट्स कंपनी, और इसी क्वेश्चन के लिए हम वो गुड आंसर बैड आंसर सब करेंगे, ठीक है। एंड आई थिंक वी डिड दैट इन ट्रिपल ए ऑल्सो ना, लास्ट क्वार्टर। हाँ, सेम एक्टिविटी तो एसबीएल के लिए तो हैव बिन डूइंग इट पहले से, ठीक है। So I'm going to show you the exam kit का question on screen, and let's understand the background information. See, pre-scene material is like a, वो गिफ्ट रैपिंग का फॉइल नहीं होता है जिससे आप गिफ्ट को रैप करते हो। मेन कंटेंट इज द गिफ्ट what you are giving to the other person, और थोड़ा सा उसको प्रिटी बनाने के लिए you put a gift paper around it, right? Pre-scene material is like that gift paper, वो सिर्फ चमकता है, बट अल्टीमेटली आप उसको फाड़ के फेंक देते हो ना, यू कीप द गिफ्ट, यू डोंट कीप द रैपिंग पेपर। दिस इज लाइक दैट, वंस यू एंटर द एग्जाम हॉल आपको लगेगा यार ये क्या है, इसको फाड़ के फेंक दो, मेरा पूरा फोकस शुड बी ऑन द एग्जिबिट। बट स्टिल प्री सीन हैज इट्स बेनिफिट्स, let's understand what those are. And don't worry, as you can see the session is getting recorded, it will be uploaded on the channel, ठीक है, don't worry about that। चलो, let's begin। So this is what the pre-scene information looks like। ये कोरजेट्स वाला जो क्वेश्चन है दैट इज ऑन द एयरलाइन इंडस्ट्री, ठीक है। दे फर्स्ट ऑफ ऑल गिव यू अ बैकग्राउंड ऑफ द इंडस्ट्री, देन दे टॉक अबाउट द कंपनी, ठीक है। यहाँ पे आपको बिजनेस का ओवरव्यू मिलता है, इन दैट पर्टिकुलर ज्योग्राफी, इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, व्हाट ऑल इज देयर, व्हाट ऑल एंटिटीज आर ऑपरेटिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर कंपेटिटर्स का इंफॉर्मेशन होता है, प्राइसिंग का इंफॉर्मेशन होता है, देर आर सम स्टैटिस्टिक्स दैट आर प्रेजेंटेड, कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा तो दे गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, एंड सर्टन चैलेंजेस दैट माइट कम योर वे। उसके बाद
You have information on key performance indicators in most cases, and then you go to the company. फिर कंपनी में वो पूरा कंपनी का बैकग्राउंड देते हैं कि यार ये यहाँ पे लोकेटेड है, वहाँ पे लोकेटेड है, इतने कंपेटिटर है, सेकंड बिगेस्ट प्लेयर है, फर्स्ट बिगेस्ट प्लेयर है, जो भी। देन दे गिव यू सम नंबर बेस्ड स्टैटिस्टिक्स, ग्रोथ कैसे हुआ यहाँ पे, जैसे पैसेंजर्स का था कहीं पे, फॉर एग्जाम्पल इफ द इंडस्ट्री इज कोचिंग क्लास इंडस्ट्री, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एडेड, समथिंग लाइक दिस. Then you have information always in every question. You will notice they give you a board structure. ये हर क्वेश्चन में आपको, हर प्री सीन में आपको मिलेगा. एक बोर्ड स्ट्रक्चर इज गिवन टू यू. अलॉन्ग विद दैट रिस्क मैनेजमेंट एंड सर्टन रिस्क दैट द कंपनी फेसेस ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस. उसके बाद यू आर ऑलवेज गिवन वेबसाइट एक्सट्रैक्ट्स. ठीक है. एंड ये वेबसाइट एक्सट्रैक्ट्स में ना, वन थिंग दैट विल ऑलवेज कम इज विजन, मिशन, पॉलिसी. ठीक है. दे ऑलवेज गिव यू इंफॉर्मेशन ऑन दैट, followed by certain graph. Corjet's headline results and breakdown. यहाँ पे रेवेन्यू, पीबीआईटी, आरओसी, पंक्चुअलिटी, जो भी है. ठीक है. सो graphs are there in each paper. Website extract is there in each paper. Website extract also has mission, values, policy, vision. ये सब होता है उसमें. Then you have the board structure in every paper, risk details in every paper. So even pre-scene follows a फिक्स्ड फॉर्मेट. ठीक है. अब लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू रीड दिस प्री सीन मटीरियल एंड हाउ एग्जैक्टली डज इट हेल्प यू. ठीक है. फॉलो माई थॉट प्रोसेस साइड बाय साइड. सी, बिकॉज ये पहला क्वेश्चन है, आई हैव मेड डिटेल्ड नोट्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड जैसे जैसे वी स्टार्ट रीडिंग आई विल कीप ऑन कनेक्टिंग यू विद दिस. ठीक है. अब Corjetz is a low cost regional airline business. It was established 20 years ago in Courland, a country located in the continent of Hungary. Over the years, it has positioned itself as one of the world's leading low cost airlines and is currently the second largest low cost airline business operating in Hungary in terms of passenger numbers. ठीक है. अब what, whenever you are going through this information, ऐसे तो we'll be doing this activity together, but even if you are sitting by yourself, तो क्या करो, start underlining points. Like I tell you in triple A कि यार वो जो बैकग्राउंड इन्फो आपको दिया है वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अंडरलाइनिंग दैट इन्फो इज वेरी इंपॉर्टेंट. हियर अगेन इट्स नो डिफरेंट. ठीक है. सो सबसे पहले व्हाट वी शुड डू इज चेक करो कि what all information according to you is critical. ठीक है. सो यहां से आप क्या उठाओ, पिकअप की बिजनेस कौन सा है, what exactly are they trying to do, और आर दे द मार्केट लीडर्स इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस, है ना, वो आपको ढूंढना पड़ेगा. आर दे द मार्केट लीडर्स, हु एग्जैक्टली आर दीज पीपल. नाउ इफ यू हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, अभी देख के क्या लग रहा है आपको, द फर्स्ट थिंग आई फील इज ओके, दिस इज अ बिजनेस विच इज अ लो कॉस्ट एयरलाइन का बिजनेस. करेक्ट. वी आर टॉकिंग अबाउट लो कॉस्ट एयरलाइन. नाउ टॉकिंग अबाउट लो कॉस्ट एयरलाइन, let's paste this in our Excel sheet and start underlining कि यार, are you the market leader, are you not the market leader, who are you. ठीक है. इसको देखो अभी. Corjetz is a low cost regional airline business. ठीक है. Regional airline business, and over the years it was established 20 years ago. 20 साल पुराना है. Low cost. So cost leadership might be one of the aspects that they are looking at. ठीक है. इट इज करंटली द सेकंड लार्जेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन. सो इसके ऊपर कोई तो है. ठीक है. Corjet's currently operates nearly 1,000 routes, that is destinations, in over 30 countries across Hungary. The first thing that comes to my mind is यार 1,000 routes है, costs must be through the roof. Head office is based at near city airport located in south of Courland. Hungary is a politically stable and economically developed continent of the world. Politically stable, economically developed. Most of the countries in Hungary form a trading bloc which facilitates free trade and free movement of people within it. Each country in Hungary uses its own currency. When you say free trade and free movement, the one thing that comes to my mind is लेस ट्रेड बैरियर्स, है ना. ट्रेड बैरियर्स कम है,
and that makes movement of goods possible. Customs, less customs, less tariffs, ये हो सकता है. This is my interpretation. Correlant's currency is the dollar, but every country in Hundriana has its own currency. Same currency नहीं है सबका. Corjetz operates a point-to-point service, meaning that it operates its flights directly between destinations. This means that its passengers do not travel to or change flights at a hub airport to reach their destination, which helps Corjetz to reduce its operating cost. It also keeps costs low through its no frills approach to flight delivery. This approach means that in flight meals are not provided unless paid for separately. जैसे एयर इंडिया फ्री मील देता है लेकिन इंडिगो पैसे लेता है ना. Right. So they are operating that model and includes the automation of a wide range of its processes, including bookings, flight documentation, baggage drop, and flight check-in. Additionally, it operates a profitable and popular portfolio of routes between over 130 airports across Hundria. ठीक है. अब लो कॉस्ट एयरलाइन है. ठीक है. लो कॉस्ट एयरलाइन है तो हाउ आर दे डूइंग इट? दे आर ऑपरेटिंग अ पॉइंट टू पॉइंट सर्विस, मीनिंग दैट इट ऑपरेट्स इट्स फ्लाइट्स directly between destinations. Passengers do not have to travel to or change flights at a hub airport. So वो जो आपके connecting flights है, they don't have connecting flights that way, which will increase passenger travel time या hopping and skipping, वो सब नहीं है. लोकेशन टू लोकेशन है. ठीक है. So this is point to point service. Then no frills is the approach that they have. For example, uh, no free in-flight meals. ठीक है. And includes the automation of a wide range of its processes. And automation है, so to that extent human involvement is not there. Profitable and popular portfolio of routes between 130 airports. मे बी इसका कुछ यूटिलिटी होगा. एट दिस पॉइंट वी डोंट नो. जैसे होगा वैसे देखेंगे बाद में. ठीक है. 130 airports across Hundria. ठीक है. The airline industry encompasses a wide range of businesses called airlines which offer air transport service to customers. Okay. Normally referred to as commercial airlines, these businesses offer scheduled commercial flights which carry both human passengers and cargo. So, when we are talking about these commercial flights, you have human traffic plus cargo. ठीक है. Commercial flights are those which transport passengers from one destination to another with a pre-booked ticket. Non-commercial flights are either operated privately or by the military. Okay, and we are not going down that route. The airline industry forms just one sector of the wide aviation industry, which also includes all other aviation related businesses such as jet engine suppliers, aircraft manufacturers, and aerospace companies. ठीक है. So, other uh, businesses in एविएशन सेक्टर. और क्या क्या है आपका? यू हैव जेट इंजन सप्लायर, ये एंसिलरी बिजनेस आप बोल सकते हो. दिस इज जेट इंजन सप्लायर. देन यू हैव एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर. देन यू हैव एरोस्पेस कंपनी. The airline industry directly and indirectly supports global trade, tourism, and economic growth. Therefore, it has had a major influence on globalization in many other industries. Now, passenger type. A leisure passenger is someone traveling on holiday to stay in a hotel or a holiday resort to relax and or experience local tourist attractions. A business passenger is someone traveling for work purpose and will normally be attending a business meeting or conference. Both types of passengers may be offered the option to travel first class, business class, or economy class by some airlines. दो टाइप का पैसेंजर दिख रहा है अपने को. एक है आपका लीजर ट्रैवल्स जो यू कैन डू आफ्टर योर एसबीएल पेपर, एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर बिजनेस ट्रैवलर्स. फॉर एग्जांपल, आई हैव टू गो एंड कंडक्ट अ lecture in some city, so I will take a flight not to enjoy the sights of Bangalore but to go and do my job there.
First class passengers pay significantly more for their ticket, but in return receive a high quality service, including dedicated airport lounges, large and comfortable in flight seats, and unlimited food and drink provided throughout the flight. Business class passengers pay less than first class passengers for their tickets and receive a slightly lower level of service. Economy class passengers, I am an economy class passenger, they pay even less for their flight ticket than business class passengers. Economy price ticket includes a standard seat with a limited leg room and standard and limited इन फ्लाइट फूड ऑप्शंस. ठीक है. तो आपके टाइप्स ऑफ कस्टमर्स क्या है? टाइप्स ऑफ कस्टमर्स दो है आपके. एक है आपका लीजर कस्टमर, दूसरा है आपका बिजनेस पैसेंजर. ठीक है. When I tried to book tickets on booking.com, they ask you what is the purpose of your journey? Are you traveling for leisure or are you traveling for some work? And what is the service level? है ना? अलग अलग सर्विस लेवल्स है यहाँ पे. द फर्स्ट वन इज फर्स्ट क्लास. देन वी हैव बिजनेस क्लास. एंड देन वी हैव, what is the third one? Economy. In school, I'm sure you had a question type in English ka paper, where they would give you a passage and then they would give you questions based on that passage. It would be an unseen passage, jisko aap comprehend kar, you would read, understand and answer the questions. If you write exams like GMAT, there also they give you some information and then they ask you to answer questions based on that. Think of SBL paper as an unseen passage that you are getting in your 12th standard board exams. वो पैसेज दिया है, उसमें से आपको आंसर देना है. You might be having some added knowledge about this business. What is this business? आपको एविएशन के बारे में पता होगा. मे बी योर फादर इज इन एविएशन, बट वो नॉलेज आपको यहाँ पे नहीं लाना है. यू ओनली हैव टू आंसर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे हैव गिवन. ठीक है. अब फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स, व्हाट डू दे डू? ठीक है. फर्स्ट क्लास पैसेंजर, significant, sorry, significantly high price, significantly high ticket price. ठीक है. बिजनेस क्लास कस्टमर्स का क्या है? बिजनेस क्लास कस्टमर्स पे लेस देन फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स फॉर देयर टिकट. लेस देन और प्राइस लेस देन फर्स्ट क्लास. इकोनॉमी पैसेंजर्स, दे पे द लोएस्ट. ठीक है. दे रिसीव हाई क्वालिटी सर्विस. क्या सर्विस मिलता है इन लोगों को? दे गेट डेडिकेटेड लाउंज. ठीक है. देन जस्ट वन मोमेंट गाइस. So what do first class people get? They get dedicated lounge. Then they get large and comfortable seats. Tell me about it. I took a flight at 5:30 in the morning. इतना सा जगह था बैठने के लिए. Large and comfortable seats and unlimited food and drink. पियो जितना पीना है, खाओ जितना खाना है. What do business class passengers do? They pay a little less than these people. ठीक है. Slightly lower level of service. Slightly lower level. एंड जो आपका इकोनॉमी क्लास है उनका क्या सिचुएशन है? दे पे इवन लेस फॉर देयर फ्लाइट टिकट्स देन बिजनेस क्लास. एंड स्टैंडर्ड सीट, लिमिटेड लेग रूम एंड लिमिटेड इन फ्लाइट फूड ऑप्शंस. लिमिटेड इन फ्लाइट फूड ऑप्शंस. ना,
Then airline type by service, international airlines are the largest and often the most well-known airlines. International airlines offer global services carrying leisure and business passengers and cargo over long distances. International airlines usually have multiple airport hubs which provide customers with access to hundreds of global destinations. National airlines focus on offering services within their home country but also offer access to international destinations. A national airline is likely to have a smaller aircraft fleet than the international airlines and also offer services to both leisure and business passengers. Regional airlines tend to focus on offering services within specific regions, for example, a continent. In some cases, they provide passenger services to locations not offered by either national or international airlines. So, cities which don't have an international airport or just within the country flight connectivity उसके लिए your regional airlines can be very very helpful. National airlines, they offer within the home country also and they offer access to international destinations also. उनका aircraft fleet is smaller. International airlines usually have multiple airport hubs which provide customers with access to hundreds of global destinations. ठीक है. So this is airline type by service, international, national, regional. Then you have by business model, full service carriers. Full service carriers offer a range of pre-flight and onboard services within the price of the ticket. This may include checked in baggage, in flight meals, airport lounges, and multiple service classes such as first class, business class, and economy class. They usually fly national, international, long haul, and short haul flights. Low cost carrier. ठीक है, they aim to gain competitive advantage over full service carriers by reducing the cost. This is done in several ways, including having smaller fleets and smaller aircraft, by offering a more limited service, and by flying to smaller and less popular airports where landing and ground handling fees are cheaper. For customers, flights from low cost carriers are often significantly cheaper. Services such as in flight meals and baggage allowances will normally not be included in the price of the ticket. Instead, where these facilities are available, customers pay extra. Some low cost carriers offer both economy and business class. आपका Indigo is a very good example of low cost carrier. Why am I saying that? Indigo में देखो, there is no first class. There are two or three rows at the start of the aircraft with which are bigger and with a bigger leg space, and then you have your regular seats at the back, and it doesn't have any customized service or free meals नहीं होता है. You have to pay for everything. Flight sizes are relatively smaller. Up Indigo versus international flights का size also you can compare that way. ठीक है. Then charter airlines. Charter airlines focus on providing passenger services to tourists to a specific destination. In most cases, they do not sell airline tickets directly, but instead enter into agreements with tour operators who then take responsibility for finding passengers. It's like, 10 friends want to take a trip to, I don't know, maybe Bali, and they want a customized experience for them. So, and पैसे वाले लोग हैं naturally, so they are not going to take an economy flight to that country. What they are going to do is they will take a charter aircraft, छोटे छोटे aircrafts, which are custom, which are of a smaller size, and it's only those 10 people that the aircraft will carry. पूरा शहर इज नॉट गोइंग विद देम. आप अगर इंडिगो देखो, देर आर 30-35 रोज ऑफ 6 ईच, राइट? सो कितना 180 200 people fly in one Indigo aircraft at a time. These are smaller aircrafts, the charter airlines. And then you have cargo. The main focus of cargo is the transportation of cargo or freight. Some cargo airlines are subsidiaries or subdivisions of airlines which also offer passenger services. Okay. So cargo is basically, like you have a goods train. वैसे these are goods carrying aircraft. ठीक है. So क्या क्या है आपके पास? You have full service. ठीक है. Then you have low cost. ठीक है. देन यू हैव चार्टर एंड व्हाट एल्स, कार्गो, है ना? एक आपके पास कार्गो है. हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? यहां पे है प्री फ्लाइट,
and onboard services included in ticket price. Low cost carriers, see they don't include that in ticket price, है ना. यहाँ पे क्या लिखा है? Baggage allowances, in-flight meals will not be included in ticket price. Baggage and meals, etc., not included in ticket price. है ना. Try to find out the differences between the two. ठीक है. Multiple facilities available. ठीक है. And they also have first class. Then they have business class. And what else do they have? They have economy and economy. उसके बाद they also have national, international, long haul, शॉर्ट हॉल. ठीक है. यहाँ पे लिमिटेड सर्विस बाय फ्लाइंग टू स्मॉलर एंड लेस पॉपुलर एयरपोर्ट्स. लैंडिंग एंड ग्राउंड हैंडलिंग फीस आर चीपर, or flights are cheaper, services are not included in ticket price, customers pay extra, and they could have economy and business. ठीक है. ये जो चार्टर फ्लाइट्स है, दीज आर चार्टर फ्लाइट्स जो है, व्हाट आर दे आर लाइक प्राइवेट टूरिंग ऑपरेटर्स, दे बुक देम एंड देन यू हैव कार्गो. ठीक है. अब लेट्स सी ये इंफॉर्मेशन का आगे कहीं पे यूज होता है कि नहीं. सी रिमेंबर, नॉट एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू काउंट. कुछ कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे ही आपको दिया रहता है एंड दैट इज जस्ट गिवन टू कंप्लीट द स्टोरी. इट्स नॉट नेसेसरीली गोइंग टू बी पार्ट ऑफ एन आंसर. Now, hub and spoke versus point to point travel. Airlines which operate a hub and spoke model fly from one airport into a hub airport, with passengers then connecting from the hub onto a flight to their final destination. Airlines operate this model because it allows them to offer more flights to passengers and is designed to optimize an airline's network coverage. For example, my hometown is Nagpur and I want to go to Jaipur for some event. Now there is no direct Nagpur Jaipur flight. ठीक है. But there is a Nagpur to Bombay flight and there is a Bombay to Jaipur flight. So Mumbai airport acts like a hub. ठीक है. So people from Nagpur will come here, people from Jaipur will come here, and from here they could go to some other place because direct flights are not available. ठीक है. So and this makes sure कि यार, because Nagpur Jaipur flying passengers might not be so much, but everybody wants to go to a big city, so that is the hub वाला model. ठीक है. Airlines operate this model because it allows them to offer more flights to passengers and is designed to optimize network coverage. The alternative to this is the point to point model, where airline focuses on providing passengers with a route from origin to final destination. There is no need to connect passengers through a hub airport as flights operate directly between cities. So Jaipur is getting connected to Pune also, Pune is getting connected to Nagpur also, it is getting connected to, I don't know, maybe some airport in Telangana also. So हर एयरपोर्ट को दूसरे एयरपोर्ट से कनेक्ट कर रहे हैं ये लोग. This model has proved popular with airline customers in recent years, and most of the low cost airlines operate this model. बट थिंक अबाउट इट, यहाँ पे ऑपरेशनल चैलेंजेस, फ्लाइट ट्रैकिंग वगैरह कम करना पड़ेगा. सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी माइट गो टू द कस्टमर कि यार तुम ट्रैक करो कि where you are going in and you book the connecting flight. There is a problem. What if the flight from say Pune to Delhi, and then from Delhi you are going to Srinagar? What if the Pune to Delhi flight arrives 2 hours late? The passenger might miss the connecting flight, and this happens in international flights a lot, where you have the hub and spoke model. Now you might not have a flight directly to say Prague. I mean, I don't know, hoga bhi, but maybe they connect you to a bigger airport and from that airport you go to the other location. तो यहाँ पे delays होने का chance है, because if this flight gets delayed, the connecting flight might leave before आपका original flight reaches that location. तो वो एक problem हो सकता है. ठीक है. Now, key airport, key air transport statistics 2002.
People transported passengers per year global 3 billion, Hundria 600 million. My God. Average number of commercial flights कितना है? Average number of commercial flights per day 73,000, 15,000. Passenger revenues 390 billion, 79.2 billion. Okay. Flight management activities. Flight management activities are provided by airports. Airlines pay for these services via airport fee. Okay. Have a look at this. Give me one moment. Flight management activities are provided by airports. Airlines pay for these services via airport fees. Basically, आपका बैगेज हैंडलिंग हो गया, आपका डिस्प्ले हो गया, अदर एयरपोर्ट असिस्टेंस हो गया, दोज आर फ्लाइट मैनेजमेंट एक्टिविटीज. देन air traffic control. It is a vital aspect of air transport. It is carried out by ground based personnel specifically trained in monitoring air traffic in a specific location. ATC is responsible for moving aircraft safely and efficiently through the airspace. Air traffic controllers ensure that aircraft remain at set distances apart while moving them between airports along set flight paths. I mean, imagine there is one flight that lands at the airport and then another one, and wahan pe, because there is no traffic policeman there, they collide against each other. Imagine the kind of disaster that might create for you. What we are saying in this situation is कि there is a set of personnel who are acting like traffic policemen, who are giving signals, who are ensuring that landing happens safely, aircrafts don't collide with each other. तो वो जो एक पूरा traffic management part है which a traffic policeman would do, they take care of that. Then aircraft ground handling. Ground handling refers to the wide range of services provided to facilitate passengers within an airport and to facilitate an aircraft's ground positioning both before and after a flight. Baggage management, including sorting customer baggage and loading and unloading baggage onto and off the aircraft. So सी आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन दिस कि व्हाट दे डू इज दे कुछ आपको एक टैग लगाते हैं, दे पुट अ टैग, देन उस पे एक देयर इज अ कोड, एक बार कोड जैसा होता है, एंड दैट एंश्योर्स कि योर luggage does not get transferred to some other person. Otherwise पहले ना these issues would happen fairly frequently कि यार आपका लगेज नहीं मिला, लगेज किसी और डेस्टिनेशन पे चला गया, people are struggling to find their bags. These days on the bag your name, your starting point, your destination, everything is mentioned. That is baggage management. ठीक है. Then customer service management, gate assignment, pre-flight facilities, then aircraft boarding management. There is a bus that takes you to the aircraft. They are talking about that. Then there is a ramp that is provided. Aircraft towing and refueling services, including movement of an aircraft to or from a parking stand or from one gate to another, and the refueling of aircraft using fuel purchased by the airline. So, मेकिंग श्योर दैट सी एयरक्राफ्ट इज ऑल्सो पार्क्ड समवेयर ना, उसको सही लोकेशन पे लेके जाना, उसको गेट देना, फ्यूल भरना, व्हेन यू एंटर एन एयरक्राफ्ट दे मेक दैट अनाउंसमेंट refueling of the aircraft is on, so all of that. Then airport security, which takes around 10-15 minutes every time you go, that is also a part of this aircraft ground handling service that is provided at the aircraft. द इंडस्ट्री चैलेंजेस, हाँ यहाँ से इश्यूज शुरू होते हैं. डिमांड इज साइक्लिकल विद डिमांड फॉर फ्लाइट्स ड्रिवन बाय इकोनॉमिक ग्रोथ. In the last 10 years, low cost carriers have increasingly taken market share from full service carriers by offering passengers affordable and low cost air travel. This has made air travel more accessible to a much wider customer base globally. It has also introduced a level of competition to the industry. Now, what is my first problem, so to say? My first problem is that demand is cyclical.
with demand for flights driven by economic growth. In the last 10 years, low cost carriers have increasingly taken market share from full service carriers by offering passengers affordable and low cost air travel, more accessible to a much wider customer base globally, high level of competition. II. Okay, so low cost carrier taking business away from full service. ठीक है. Now, trips affordable plus low cost travel now accessible to a much wider customer base. ठीक है. Then, airline industry has been impacted by several geopolitical events in recent years, such as terror attacks, cyber attack, and extreme weather events caused by climate change. These have led to both short and long-term consequences for demand. Terror and cyber attacks have impacted on customer confidence in the industry, and climate change is increasingly prominent on the global political agenda. Now we know when the India Pakistan tensions had escalated, airspace had been closed, right? So what does that mean? If, say, for example, you have to go from India to, say, Central Asia. Now you'll have to fly over Pakistan. That would be the shortest route. But if the airspace is closed, तो आप पाकिस्तान के ऊपर से fly नहीं कर सकते. You'll have to take a longer route, which means what? More cost is incurred, right? So challenges faced. ये 12 नहीं लग रहा है यार साइज. 11 नहीं लग रहा है. हाँ, नो वंडर. You know how I am about size 11. Okay. What are the challenges? Geopolitical events. ठीक है. और देन टेरर अटैक. अभी तो हर दिन कोई ना कोई कंट्री, किसी ना किसी कंट्री के साथ देयर इज समथिंग हैपनिंग. साइबर अटैक्स. इमेजिन द बुकिंग सिस्टम और गूगल इज डाउन फॉर, imagine 10 minutes. कितना लॉस इन बिलियंस कैन हैपन बिकॉज ऑफ दैट. Then climate change leading to extreme weather. अब, like today morning when I landed at the Delhi airport, there was fog. But abhi it's only 10th of November. As the days as the days go by, the fog layer will become thick. And because of the pollution, visibility becomes even more difficult. So flights don't take off, flights find it difficult to land also. So airport operations are reduced. And naturally यार, when flights are cancelled for these reasons, they don't pay your money back. वो आपका पैसा वेस्ट हो जाता है. ठीक है. So extreme weather. Fuel is one of the biggest cost for airline and one of the most volatile. Fuel represents over 20% of most airlines' cost base annually. The price of jet fuel is strongly correlated to the international price of crude oil, which has been highly volatile in the last 5 years. Fuel costs are particularly prone to forex movements, which can also have a significant impact on this major cost. ठीक है. Fuel cost. ठीक है. I'm sure you will agree with me when I say this is the biggest, they are saying it's the biggest cost. 20% of total cost. ठीक है. एविएशन फ्यूल या जेट फ्यूल कनेक्टेड टू क्रूड ऑयल प्राइस, हाईली वॉलेटाइल. देन और क्या है? फॉरेक्स फ्लक्चुएशन. फिर करते रहो आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स. You know how costly that can get, right? उसका जो ऑप्शन प्रीमियम है या whatever services you are arranging, you have to pay arrangers fee. You have to, even if you hedge for that particular item, क्या होता है? In spite of hedging, there is a premium that you have to pay. तो वो एक पॉइंट आ जाएगा. ठीक है. It can have a significant impact on the cost.
Airline industry is still some way away from operating aircraft with alternative fuels such as biofuels, and most airlines are still fully reliant on crude oil. Governments and customers are becoming increasingly environmentally sensitive, and the expectation for airlines to operate in a greener way is increasing. If the airline industry is to survive in the long term, it will need to invest significantly in alternative fuel sources. ठीक है. So uh, fuel costs on the rise, alternative fuels way forward for the companies. They will have to evaluate these, and governments and customers, of course, they will become more and more. उनके तरफ से भी demands are coming कि यार we want to work with companies which are using green finance, or which are causing less damage to the environment. Pressure from government and population or people in general for greener measures. ठीक है, ये रफर क्या आपका, just noting down things. Then environmental factors are a major and increasingly significant issue for the airline industry, affecting both passenger demand and operating parameters. Customers are increasingly aware that their carbon footprint from airline travel is contributing around 3% of global carbon emissions. Therefore, many are actively considering alternatives to air travel. ठीक है, so customers concerned about कार्बन फुटप्रिंट पढ़ के आए होंगे ईएसजी के बारे में. Environmental factors are a major and increasingly significant issue affecting both passenger demand and operating parameters. ठीक है. Then, despite environmental concerns, commercial international air traffic increased by 5% in 2002, according to the latest industry data. ठीक है. International air traffic control environment is struggling to cope with increasing flight numbers, evidenced by the number of delayed flights rising by nearly 20% in 2002. ठीक है. International air traffic control is struggling to cope with increasing flight numbers, evidenced by number of delayed flights rising by 20%. ठीक है. So, international air traffic increased by कितना परसेंट, increased by 5%, and delayed flights up by 20% in 2002. Airports are struggling to cope with demand from airlines for flight slots. This is leading to increased congestion. I mean, what better example as compared to Mumbai airport? कितने बार ऐसा होता है कि the flight is in the Mumbai airspace but it cannot land because there is no space to land. So airport का congestion is a major problem. ठीक है. More delays for passengers. This is also driving up aircraft ground handling service charges for all airlines. ठीक है. So और क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको? Increased congestion at airport. ठीक है. Then slots are difficult. ठीक है. Slots are difficult. Then more delays from passengers and driving up ground handling charges. ठीक है. सी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम नॉट अप्लाइंग, कोई थियोरी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, कोई मॉडल अप्लाई नहीं कर रहा हूँ. जो डेटा इतना सारा दिया ना उसको मैं छोटा, आई एम जस्ट ब्रेकिंग इट डाउन इनटू पॉइंट्स. So now instead of reading so many paragraphs, I have all of this information. Challenges faced, fuel cost, customers concerned about carbon footprint, then traffic increase के वजह से क्या हो रहा है. I'm just getting it together in one place. ठीक है. सो हाउ इज सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आपको जो प्री सीन मटेरियल आएगा, यू जस्ट हैव टू गेट, मतलब इंस्टेड ऑफ हैविंग टू लुक एट दोज 20 पेजेस, यू आर डूइंग अ थरो एनालिसिस वेल इन हैंड. ठीक है. अब हाँ, दिस इज वेयर थिंग्स स्टार्ट गेटिंग इंटरेस्टिंग. इंडस्ट्री केपीआई.
Airlines use multiple performance metrics to measure and monitor their performance. Available seat kilometers. ASK is calculated by taking the number of seats available and multiplying by the distance flown, measure of airline capacity. ठीक है. Then, so what is this number of seats available and multiplying by distance flown? So say Mumbai to Delhi. ठीक है, ये आपका रूट है. Suppose this is 1,000 kilometers and there are, for example, 200 seats. ठीक है. तो what are available seat kilometers? 2 lakh seat kilometers. What is this a measure of? Airline capacity. Then revenue per seat kilometer is calculated by dividing airline's total revenue by its total ASK. It is a measure of potential revenue generation. Airline's total revenue. And see, this is a dynamic number because it's not like आपका बस का टिकट, BST बस अगर आप देखो, इट्स द सेम टिकट फ्रॉम योर हाउस टू द लोकल स्टेशन, राइट? वो चेंज नहीं होता है. बट एयरलाइन का टाइम ऑफ बुकिंग के हिसाब से, टाइम ऑफ ट्रैवल के हिसाब से दैट चेंजेस. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल, इंडिगो का रेवेन्यू है 40 million. ठीक है. एंड अवेलेबल सीट किलोमीटर्स है 2 lakh. ठीक है. सो रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट किलोमीटर है 40 million डिवाइडेड बाय 2 lakh. वो जो भी नंबर आएगा. आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ मिलियन माई सेल्फ. 200 रेवेन्यू पर सीट किलोमीटर, $200 पकड़ लो फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. लोड फैक्टर कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ चेक्ड इन पैसेंजर्स इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट अवेलेबल सीट, मेजर ऑफ यूटिलाइजेशन. जैसे इन टूडेज फ्लाइट वी हैड टोटल सीट्स कितना? वी हैड से 200 सीट्स. ऑक्यूपाइड कितना है? ऑक्यूपाइड है 162. सो आपका लोड फैक्टर हो जाएगा समथिंग लाइक 162 अपॉन 200 विच इज 81%. रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर, RPK, is the number of passengers multiplied by the total distance traveled, shows the number of kilometers traveled by paying passengers who are referred to as revenue passengers. ठीक है. Number of kilometers traveled by paying passengers, number of passengers multiplied by total distance traveled. Then CO2 per passenger is CO2 produced by airline divided by the number of passengers. So during the year कितना metric ton carbon dioxide was released and how many passengers took the flight. अब इसमें problem क्या है? When your flight moves from Mumbai to Delhi, सपोज यू आर रिलीजिंग 100 units ऑफ CO2. जितने ज्यादा पैसेंजर्स ना, उतना इट मेक्स मोर सेंस टू फ्लाई. अदरवाइज आपके टोटल पैसेंजर्स है 200, मतलब उतने सीट है, बट नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे इज ओनली 20 फॉर एग्जाम्पल. तो वो वसूल ही नहीं हुआ ना, इतना पोल्यूशन करना वसूल ही नहीं हुआ. दैट इज CO2 per passenger. And then punctuality, the percentage of flights which land on time at the destination airport. Typically, this means landing within 15 minutes of the scheduled arrival time. सो जो आपका ETA है, इफ इट इज 7:20 AM, देन अगर आप 7:35 तक भी पहुंचे तो दैट्स अलाउड. ठीक है. इंडस्ट्री बॉडी, द एयरलाइन इंडस्ट्री हैज अ ग्लोबल ट्रेड एसोसिएशन. इट्स रोल इज टू हेल्प फॉर्मुलेट इंडस्ट्री पॉलिसी एंड सपोर्ट एयरलाइन एक्टिविटी. इट promotes awareness of the benefits which the airline industry brings to national and global economies. Its role is to develop global standards for the air transport industry, and it provides advice on airline safety and security by setting clearly defined rules. जैसे यू लाइक अ ट्रेड बॉडी इज देयर इज अ ग्लोबल ट्रेड एसोसिएशन फॉर एयरलाइन इंडस्ट्री. ठीक है. अब background info, whatever we could, we have broken it down. Maybe we'll have to use this if some company related data is given. वो check करते हैं. ठीक है. We'll understand it as we move along. Corjetz. This is now company related. Huh? Corjetz was established in Corland 20 years ago by the entrepreneurial brothers Eric and Axel.
They both had worked for many years in the airline industry and had a keen interest in traveling. With money inherited from their parents, Nepo babies, they acquired two second-hand aircraft. They started by operating flights from near city airport located 40 miles from Corland's capital city to airports located close to two cities in the north of the country. Using their knowledge and experience of the airline industry, Eric and Axel spotted a gap in the market in Corland for more convenient and affordable low cost air travel. Up to that point, Corland's air industry was dominated by full service carriers. The low cost business model in the Corland airline industry proved extremely popular with air passengers who liked the convenience of Corjet's point to point service and the significantly cheaper ticket prices than those offered by existing full service carriers. यहाँ पे I could call this what helped or what was the differentiating factor. ठीक है. So differentiating factor for Corjets क्या था? VEN, convenient and affordable low cost air travel. ठीक है. Extremely popular with air passengers who liked the convenience of Corjet's point to point service. तो वो हब मॉडल ऑपरेट नहीं कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे we saw what is the difference between the hub model and the point to point model. So they were going from Jaipur to Ahmedabad and Ahmedabad to I don't know Lucknow and all sorts of cities. But वो जो hub model है where they meet at a certain major airport and then you take flights, that model they have not adopted, and this became way more convenient for the consumers. The low cost model proved extremely popular with air passengers who liked the convenience of Corjet's point to point service and significantly cheaper tickets than those offered by existing full service carriers. मुझे इसको छोड़ के अभी तक और कुछ पॉइंट नहीं दिखा है. See, you might have to come back to a certain point later. ठीक है. Just one moment. Okay. Over the years, Corjetz has focused on operating flights to and from airports across Hundria with the highest customer demand and continually looks for opportunities to extend its network. Cost efficiency has been its overriding strategic focus. This has been delivered through developing and maintaining long term strategic partnerships with aircraft manufacturers, key airports, ground handling operators, and maintenance contractors who maintain Corjetz's owned aircrafts and by operating the latest and most efficient aircraft. ये बहुत सारा इंफॉर्मेशन लग रहा है यार. इसको ब्रेक डाउन करते हैं in words that we can understand. Corjetz has focused on operating flights to and from airports across Hundria with highest customer demand and continually looks for opportunities to extend its network. See, they are operating airports which have the highest customer demand. So, operate from airports which have highest customer demand. ठीक है. Look for opportunities to extend. Cost efficiency has been its overriding strategic focus. Cost efficiency is strategic focus. This has been delivered through developing and maintaining long-term strategic partnerships with aircraft manufacturers. ठीक है. How did you achieve that? Long-term strategic partnerships with aircraft manufacturers. ठीक है. Then key airports, then ground handling operators and maintenance contractor. Up, this is where students will go overboard. They will start thinking about some article they have read in the newspaper, ki how Indigo has, you know,
tried to be a low cost airline by, entering into these contracts or through efficient operations, whatever. There's a book, I'm forgetting the name. It's about the entire journey of Indigo. Has anyone read that book? इंडिगो स्टोरी या ऐसा कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है। किसी ने पढ़ा है क्या? आई जस्ट गूगल द नेम। मुझे एकदम याद आया। बुक ऑन इंडिगो एयरलाइंस। द रीजन आई मेंशन, हाँ, द इंडिगो स्टोरी। द प्रॉब्लम इज इफ समबडी हैज रेड द बुक, आप क्या करोगे? आप उसमें जो पढ़ा है ना आपने, वो आप यहाँ पे अप्लाई करने का कोशिश करोगे इन केस समवन हैज रेड इट। बट द पॉइंट इज योर स्पेशलाइज नॉलेज इज ऑफ नो यूज। इधर देखो इन्होंने क्या किया है। दे हैव जस्ट मेंशन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। अब उसमें क्या है वो दिया नहीं है, नहीं दिया तो ठीक है, चुपचाप बैठो। इफ यू हैव दैट इन्फॉर्मेशन देन नेचुरली यू विल डेवलप इट फर्दर। अब लो कॉस्ट एयरलाइन का मार्केट शेयर, अदर एयरलाइंस 27 इन नंबर 60%, ब्रिग एयर ब्रोलैंड 17%, कॉर्जेट्स इन कोरलैंड 14%, एलकेके इन लैकलैंड 9%. Over the last 20 years, the low cost model of air travel has continued to be very popular with customers across Hundria, and there are now 30 low cost airlines operating across the continent. Eric and Axel both retired from the business 10 years ago, but since their departure, Corjetz has remained focused on maintaining and strengthening its low cost strategic position. ठीक है, यहाँ पे there are 30 operators now, 30 operators in the low cost airline model, sorry, in the low cost airline business. बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। And these people have retired, but since their departure, Corjetz has remained focused on maintaining and strengthening its low cost strategic position. Routes भी increase हुए हैं, passengers in million has also gone up. Corjetz was listed, अरे वाह, very good, listed on the Corland Stock Exchange 9 years ago, 1 year after Eric and Axel retired. The brothers originally retained a 35% share in the business when it was first listed, promoter shareholding, but since then they have sold most of their shareholdings in Corjetz and they no longer play any role in running the business. Currently, 80% of Corjetz's shares are held by large institutional investors, 10% of the shares are held by Corjet's employees, and remaining shares are held by small private investors. अब see, earlier it was a promoter driven business, ठीक है। Earlier, Corjetz was a promoter driven business, and promoters held 35% shares even on listing. That means the culture in the organization would have been different at that point in time. Promoter driven culture होगा, not maybe not professional, maybe professional, we don't know, but हो सकता है कि उसका अप्रोच कुछ और ही होगा at that point in time. But now, what is the shareholding pattern now? It is 80% held by large institutional investors, ठीक है, 10% by employees, and 10% by private retail investors. I'm sure you keep on reading information about foreign institutional investors pulling out of Indian companies, Indian stocks, right? उसके बारे में we keep on reading all the time. We have done a video on that, on institutional investors and the role they play. BlackRock का example दिया है मैंने उसमें. Now what they are saying is कि अभी the percentage holding has changed, but still 80% is held by large institutional investors and very less proportion is held by private individuals like you and me. Magda Fisk is the current CEO of Corjetz and has been in place for 10 years. She was instrumental in achieving Corjetz ka listing. Sounds like a key managerial person for me. This Magda Fisk. She is the current CEO. ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन टाइम लेगा, हाँ, एंड एक्चुअल प्रीसीन इससे ज़्यादा टाइम लेगा, बिकॉज यहाँ पे तो चलो दिस इज अ रेडीमेड क्वेश्चन दैट वी आर यूजिंग।
Actual pre-scene will take more time. Okay. Corjet's ka key resources has a profitable and extensive portfolio of routes which it operates to and from over 130 airports, makes it very popular with customers who find the range of destinations and frequency of flights offered by Corjet's very convenient and attractive. ठीक है. What works in favor is the number of routes. कितने तो रूट्स आप ऑपरेट कर रहे हो, कितने? 130 एयरपोर्ट्स अक्रॉस हुंड्रिया. Very popular with customers who find the range of destinations and frequency convenient and attractive. ठीक है. Fleet. Corjetz operates a modern fleet of 300 aircrafts, of which 75% are owned outright and remaining 25% are leased. Leasing is a common form of financing in the airline industry. ठीक है. Now the SBR faculty in me is thinking about problems with owning the aircraft and versus how working capital gets blocked and how you should have leased the aircrafts, but we are not doing SBR right now. 300 एयरक्राफ्ट है, 75% ओन्ड आउटराइट है, 25% लीज्ड है. ठीक है. इट हैज इन्वेस्टेड सिग्निफिकेंटली इन द लेटेस्ट एयरक्राफ्ट विच आर मोर फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली. तो चलो, वो जो आपका एक ऑब्जेक्टिव था वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो रहा है. This has contributed significantly to its low cost strategic position and has also positively impacted on reducing carbon emissions. Corjetz's average aircraft is 4.5 year old, which is low compared to the industry standard. तो अगर एयरक्राफ्ट का लाइफ इज लेस एज कंपेयर टू, मतलब लेस ईयर्स हैव गॉन बाय, age is less, not life, age is less, then that means there is more productive life left in the aircraft, correct? Corjet's focuses on leisure passengers rather than on business passengers. Therefore, its aircraft cabins consist of economy class seats only with high density layout. This gives Corjet's 150 seats per aircraft compared to 140 seats on similar sized aircrafts operated by its competitors. This higher seat density allows Corjet's to offer lower ticket prices. Imagine Koro, somebody tells you that listen, you have to make a revenue of 20 lakh rupees on this flight and you have how many seats? You have 200. जरा ज्यादा हो जाएगा. You have to make a revenue of 2 lakh rupees on this flight. You have 200 seats. So you will feel कि यार I have to charge 10,000 rupees per customer. ठीक है. This is my revenue target. These are my available seats and this is price per seat. ठीक है. एज अपोज टू दैट, इफ somebody tells you कि यार टारगेट आपका 20 लाख है बट नंबर ऑफ सीट्स इन द एयरक्राफ्ट आर 250, यू विल बी एबल टू चार्ज लोअर फी पर सीट एंड दैट वे यू कैन बिकम मोर पॉपुलर कि यार ये जो एंटिटी है, ये एयरलाइन है, ये कम में आपको ट्रैवल कराता है, सो पीपल विल प्रिफर दिस कंपनी ओवर अदर कंपनीज. एंड व्हाट इज द सिचुएशन हियर? दिस कंपनी और दिस पर्टिकुलर कोरजेट्स के जो एयरक्राफ्ट है, these have they only have economy because they focus on leisure business passengers. ठीक है. So focus on leisure customers and not business customers. ठीक है. So when you focus on leisure customers and not business customers, you don't have to give a business class ticket. So you can only have, your economy class ticket. So economy seats जो है, they take lesser space, which means you can have more economy seats in the same area. And that can help you to offer a lower ticket price. ठीक है. Then Corjetz applies data analytics extensively throughout its business and considers data to be a key business resource. It has always been an early adopter of the latest technology in the airline industry. It currently makes extensive use of technology throughout its business operations, including a mobile app which allows passengers to book flights, check in for flights, download boarding passes to either print off or store as a mobile boarding pass on the passenger's smartphone, and receive real time flight status info, like अपना इंडिगो का ऐप जैसे होता है वो. The app significantly reduces the cost of issuing, distributing, and processing physical tickets. An enhanced feature of the mobile app is the integration of live data from the airport's information system with the passenger's booking and flight details, allowing personalized instructions and updates. कितना पका रहे हैं ये लोग.
मोबाइल ऐप बोल के समझ में आ जाता है ना, बट इनको लिखना है 7 लाइन 8 लाइन, क्यों? टाइम पास, और कुछ काम है ही नहीं लाइफ में। In most airports, Corjetz operates fully automated baggage check-in machines to help reduce check-in queues. All aircraft are fitted with electronic touchpads for the crew to replace laptops and printed navigational charts for pilots. This has reduced the need for each flight to carry heavy printed flight logbooks, which has helped to reduce CO2 emissions. So, these electronic touchpads, so no need to carry laptops. So, आप कम weight carry कर रहे हो, if your weight is less, then CO2 emission might be lower. Right, fully automated baggage check-in machine है, like these days, at all the major airports, मैंने दिल्ली एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट दोनों जगह देखा है, you don't have to stand in the queue for checking in the baggage. There is this, एक बड़ा डिवाइस होता है, you scan the bag, then वो you put your whatever 6 digit का जो भी आपका कोड होता है वो, then it generates that sticker, you put it on the bag and automatically it takes it ahead. So naturally the cost is going down, and all Corjet's aircraft are fitted with big data servers to collect continuous in-flight data about flight and engine performance. ठीक है, you read this, I'll be back in a moment. Now, see, smaller changes are making a big difference for this company in terms of tech. ठीक है, एंड दीज कुड बी सोर्सेस ऑफ competitive advantage. इलेक्ट्रॉनिक टच पैड हो गया, सो यू डोंट नीड टू कैरी लैपटॉप. देन प्रिंटेड नेविगेशनल चार्ट है. रिप्लेस द नीड फॉर ईच फ्लाइट टू कैरी हैवी प्रिंटेड फ्लाइट लॉग बुक्स. सो if you have noticed, इंडिगो का बैगेज अलाउंस इज 15 kg, एयर इंडिया का 25 kg, सम अदर, आई डोंट टेक इंटरनेशनल फ्लाइट सो आई डोंट नो वहाँ पे कितना है, बट इंडिगो चार्जेस यू द मोमेंट you exceed 15, correct? So all of these measures that Indigo does not serve hot food, if you have noticed. वो क्या करते हैं, they have these poha and upma, and what the air hostess does is she puts hot water in it and वो गर्म होके आपको मिलता है. Now this way Indigo doesn't have uh, oven, sorry, not oven, microwaves and all these heavy equipment fitted in the aircraft. तो उनका एयरक्राफ्ट का वेट कम हो रहा है, और बिकॉज उनका एयरक्राफ्ट का वेट कम हो रहा है, it can move towards that low cost target. Same thing is happening with Corjet's also. ऑटोमेटेड चेक इन है तो अगेन ह्यूमन कॉस्ट आपका कम हो रहा है, सैलरी कॉस्ट एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? So these are some of the advantages that you are getting here. Now we are going to do one full length, एक हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करने वाले हैं. once we have read through the entire material, where I will give you some models and I will tell you कि ये compare करो, वो compare करो, whatever that is. ठीक है, so you'll have to give me some time till we reach that point. Corjet's nearly employs 11,800 staff, including over 2,000 pilots and 6,500 cabin crew. The remaining staff fulfill a number of roles, including staff operating at airports and head office, staff operating in IT, finance, HR. हाँ भाई, ये रंगोली वाले. Customer services, no, they are not rangoli wale, but HR is. Regular updates are provided to employees on key business issues, which include a regularly updated intranet, a monthly Meet the Board online chat, and a weekly staff newsletter. What is weekly monthly Meet the Board online chat? आप लोग इंस्टाग्राम पे करते हो ना, आस्क मी एनीथिंग. आप नहीं करते हो, लोग करते हैं, राइट? वैसे ही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज सेइंग आस्क अस एनीथिंग.
So employees feel कि they have a connect with the senior management that way. And weekly staff newsletter, वही R&R रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन सेलिब्रेट करना, इसका बर्थडे, उसका एनिवर्सरी, ऑल ऑफ दैट। उससे पता नहीं किसको मोटिवेशन मिलता है, बट अपेरेंटली लोगों को मिलता होगा। ऑल एम्प्लॉयज रिसीव रेगुलर एंड स्केड्यूल्ड मैनेजरियल अप्रेजल फॉर देयर परफॉर्मेंस। कितना? 2.5% ग्रोथ। ऐसे ही होता है ना, 2.5%। बजट नहीं है हमारे पास, company has done well, but you need to, you know how those stocks go, which is why you should have your own business so that you don't have to worry about these things. Corjetz has 6 executive directors, 5 NEDs, including the chair. The board structure is as follows: एक आपका नॉन एग्जीक्यूटिव चेयर है, यू हैव अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके नीचे ये आपका CXO स्वीट है पूरा। CFO है, इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, कमर्शियल ऑफिसर है, मार्केटिंग ऑफिसर है, पीपल ऑफिसर है। ये सबसे निकम्मा होगा। चीफ पीपल ऑफिसर मतलब HR का हेड, चुगली किंग। Then senior independent non-executive director, non-executive, non-executive, non-executive. Now, if you remember, we have seen one tier board, two tier board, है ना? तो वो अपने को यूज करना है, ठीक है। देर आर 4 सब कमिटीज: ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन कमिटी, रेम्यूनरेशन कमिटी, सेफ्टी कमिटी। Risk management and key risk. Corjetz has a detailed risk register and a robust enterprise risk management framework in place. The board takes responsibility for determining the nature and extent of the risk it is willing to take to achieve its strategic objectives. Also responsible for maintaining and monitoring the system of internal control and risk management. Risk management activities are coordinated by risk and assurance team led by a risk manager who reports to both CFO and to the chair of the audit committee. कुछ यहाँ पे रेड फ्लैग लग रहा है आपको? Risk manager reports to CFO also, chair of audit committee also. Don't you think it will create some confusion with respect to chain of command? Right? You should note that down. Yes, sir. Reporting to two people. This is just one small problem. Safety and secure key risk include safety and security of customers and staff. Delivering safe and secure operations which meet the needs and expectations of customers and staff is critical to the business. Now I'm going to give you one activity here एंड में, ठीक है। आई एम गोइंग टू गिव यू अ फॉर्मेट फॉर रिस्क रजिस्टर। आपके सामने रिस्क लिखा है, ठीक है। वॉट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू फ्रेम द रिस्क रजिस्टर एज योर होमवर्क। आई एम गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ होमवर्क दैट यू हैव टू फिनिश टिल वेंसडे। वन ऑफ दोज इज योर रिस्क रजिस्टर। आपको मैं दिखा दूं, मैंने रिस्क रजिस्टर ये क्वेश्चन का बना के रखा है। फ्यूएल प्राइस वोलेटिलिटी एंड फॉरेक्स एक्सपोजर, देन सब कुछ मैंने बना के रखा है। बट आई वॉन्ट यू टू मेक इट। आई विल नॉट शेयर दिस शीट विथ यू टुडे, वील डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। बट वॉट आई वॉन्ट यू टू डू इज, मैं आपको पूरे पैरामीटर्स दूंगा, आपको रिस्क रजिस्टर इसका कंस्ट्रक्ट करके बताना है। ओपन द स्टडी हब फॉर दैट, नो प्रॉब्लम। दिस वीक प्लीज मेक श्योर दैट यू आर ओपनिंग द स्टडी हब, और अपना नोट्स जो भी है, मेक श्योर दैट यू आर ओपनिंग दैट। डोंट रिलाई जस्ट ऑन योर नॉलेज, जरूरत नहीं है उसका, ठीक है। देन growing impact of climate change, this is a risk, right? Growing impact of climate change is a risk. How do you what is describe the risk? Then what are the existing controls? What do you recommend in place? Whose responsibility? तो वो सब अपने को इसमें डिस्क्राइब करना है, ठीक है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द प्री सीन डिस्कशन। आई एम जस्ट सेटिंग द टोन टुडे, बिकॉज अपने को इस पे और बिल्ड करना पड़ेगा आगे। एक सेकंड ना, अभी तक कुछ यूज किया आपने स्पेसिफिकली? नहीं ना? डिड वी यूज अ मॉडल? नो, बट वी विल। अभी तो हमने जस्ट पढ़ा है इंफॉर्मेशन, वी विल बी यूजिंग अ मॉडल। देन देर आर वेबसाइट एक्सट्रैक्ट्स। व्हाट वी डू, सब फेंकने की बात है। We consistently deliver low fares for our customers and operate flights to the places our customers most want to travel to using our cost advantage and leading position at airports across Hundria. We are low cost people, ठीक है। देन मिशन स्टेटमेंट, टू कनेक्ट द पीपल ऑफ हुंड्रिया थ्रू अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल एयर ट्रैवल, ठीक है। एक बार ये वैल्यूज देखो तो, चेक द वैल्यूज वंस, रीड दीज केयरफुली।
सो sustainable behavior, these are our values: managing emissions, investing in efficient aircraft, minimizing waste. ठीक है. Putting people first, engaging with employees, offering fair rewards, providing development opportunities. So we are making sure that our employees are compensated adequately. Then we are giving them development opportunities. We are also making sure that we talk to them. वो जो ऊपर था ना कुछ मीट द बोर्ड वाला मंथली थिंग, दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट. Then investing in latest tech, that is how we drive innovation. Then customer innovation to improve customer experience, staff health and security, customer security, and emergency preparedness. This is our commitment to safety, and this is how we build customer trust by customer satisfaction, data protection, preventing bribery and corruption. ठीक है. One last thing before we go into a deeper analysis. ठीक है. ये है आपका रेवेन्यू, पीबीटी, आरओसीई, पंक्चुअलिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉस्ट ब्रेकडाउन. अभी हमने वी हैवंट डन एनाल बहुत ज्यादा एनालिसिस हमने अभी तक किया नहीं है. वॉट आई डिड जस्ट नाउ वॉज आई जस्ट रेड थ्रू द प्री सीन एंड वॉट एवर पॉइंट्स आई फेल्ट कि यार ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने जस्ट उसको नोट डाउन किया है. ठीक है. नाउ कम्स द मेन पार्ट कि इसको अभी एनालाइज कैसे करना है. सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी गिविंग यू अ सेट ऑफ टास्क्स. ठीक है. अब व्हाट आर दी सेट ऑफ टास्क्स? आई विल बी राइटिंग इट इन द शीट. आई विल बी सेंडिंग द शीट ऑन द ग्रुप और आपको मुझे एनालिसिस करके देना है. ठीक है. एंड वो एनालिसिस बहुत सिंपल है. कुछ मैं आपको डिफिकल्ट एक्टिविटी नहीं दूंगा. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव द वीडियो ऑन पेस्टल, राइट? आपने देखा है पेस्टल वाला वीडियो, ऑल ऑफ यू? नहीं भी देखा होगा तो पेस्टल तो सबको आता है, पता है ना? तो व्हाट आई वांट यू टू डू नाउ इज, ये देखो, मेरे पास सब तैयार है. आई हैव एवरीथिंग रेडी. बट पेपर मेरा नहीं है, पेपर आपका है. तो आई वांट यू टू डू सर्टन एक्टिविटीज फॉर मी. व्हाट आर दोज? सबसे पहले आई वांट यू टू एनालिसिस वन. ठीक है. आप क्या करेंगे? यू विल नोट डाउन द केपीआई. ठीक है. देन check the company data, including graphs, and see if KPI is achieved or not. ठीक है. यहां पे क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? यू हैव कॉस्ट ब्रेकडाउन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, पंक्चुअलिटी, आरओसीई. अब इफ आई रिमेंबर इट राइट, पंक्चुअलिटी इज वन ऑफ द केपीआईज, है ना? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में पंक्चुअलिटी है. ठीक है. देन यू हैव अवेलेबल सीट किलोमीटर्स. रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट किलोमीटर मैंने आपको एक इलस्ट्रेटिव कैलकुलेशन बताया है, राइट? सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज आई वांट यू टू नोट डाउन द केपीआई एंड यू हैव टू चेक द कंपनी डेटा इंक्लूडिंग ग्राफ्स एंड सी इफ केपीआई इज अचीव्ड और नॉट. मतलब पंक्चुअलिटी कौन से ईयर में हुआ, कौन से ईयर में नहीं हुआ. सी व्हाट इज the percentage of flights which land on time at the destination airport. Typically this means landing within 15 minutes of the scheduled arrival time. अब ये देखो, पंक्चुअलिटी एंड ईयर. इन द ईयर 2010 समवेयर 81% पंक्चुअलिटी था. 81% फ्लाइट्स लैंडेड विद इन द गिवन अमाउंट विद इन दैट टाइम फ्रेम. 2009 में कम था. 2011 दिस वाज द हाईएस्ट ईयर. इट वेंट टू अ हाईएस्ट पॉइंट एंड देन इट हैज रिसीडेड. रेवेन्यू का डेटा दिया है, राइट? सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज, जैसे अब आपने पंक्चुअलिटी का मैपिंग किया, यू डिस्क्राइब द पैरामीटर एंड यू कंपेयर इट ईयर ऑन ईयर एंड यू डू योर एनालिसिस कि इस ईयर में पंक्चुअलिटी इतना परसेंट था, देन इतना परसेंट था, अचीव्ड और नॉट, गोइंग अप, गोइंग डाउन. वो ट्रेंड आपको एक एनालाइज करके मुझे देना है. ठीक है. देन ये हो गया आपका फिनेंशियल एंड ऑपरेशनल केपीआई रिलेटेड. ठीक है. उसके बाद व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू डू अ गुड स्वॉट एनालिसिस फॉर मी. आप स्ट्रेंथ जो भी पूरा आप डेटा सर्च करेंगे, यू विल
talk about strength, weakness, opportunity, threat. If I were to talk of strength, where will I go? I will go here. My mind will take me here. Technology. See, strength is something which is internal to the company. Correct? है ना? सो यहाँ पे मोबाइल ऐप है, सो डिजिटल प्रिपेयर्डनेस और डिजिटल इनोवेशन, स्ट्रॉन्ग डिजिटल कैपेबिलिटी, दैट इज माई स्ट्रेंथ. और इफ यू रिमेंबर, मैंने 130 एयरपोर्ट्स का हमने देखा था, दे कनेक्ट विथ 130 एयरपोर्ट्स. सो दैट इज अ स्ट्रेंथ. देन वी हैड सीन, हाँ ये देखो, Corjetz focuses on leisure passengers rather than on business passengers, so they can have more seats as compared to a similar sized aircraft operated by competitors. That enables them to offer a low ticket price. ये क्या है? ये strength है आपका. ठीक है. So strength, weakness, opportunity, threat में you will go through the data and you will write down whatever you believe to be the strength of this company, whatever you believe to be the weakness, what opportunities lie. Opportunities are external and threats are also external. One threat that comes to my mind is fuel price स्पाइक हो गया, फॉरेक्स का फ्लक्चुएशन हो गया, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हो गया. देन इफ यू सी यहाँ पे फ्लाइट कंजेशन का हमने कुछ पढ़ा था ना? कहाँ था? हाँ, इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक इज इंक्रीजिंग. दीज आर एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, करेक्ट? This comes in threat. Tell me, the two analysis that I told you to do you need any specialized SBL knowledge or any specialized model का knowledge? No. कॉमन सेंस बेस्ड है. ये दो सेकंड एक्टिविटी है. ठीक है. देन थर्ड एक्टिविटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इज आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटेजिक इश्यूज. एनालिसिस 3. दिस इज आइडेंटिफाइंग स्ट्रैटेजिक इश्यूज. अब स्ट्रैटेजिक इश्यूज क्या है? फॉर सी दिस आंसर कैन बी डिराइव फ्रॉम योर थ्रेट्स पार्ट ऑल्सो. ठीक है. बट आपको थ्रू आउट डेटा यू विल हैव टू सर्च फॉर दिस. ठीक है. मैं आपको स्ट्रेटेजिक इश्यूज बताता हूं, आपको उसको डेवलप करना है. ठीक है. सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज, वन ऑफ द इश्यूज इज फ्यूल एंड फॉरेक्स प्राइस volatility. Do a thorough analysis of that. Support it with numbers. Everything has to be supported with numbers. ठीक है. Then ground handling fee, airport ground handling fee and slot scarcity. वहां पे लिखा था स्लॉट स्केर्सिटी के बारे में, एंड आई थिंक वी वेंट थ्रू इट अच्छे से ना. यहाँ पे देखो, स्लॉट्स का इशू था. स्लॉट्स आर डिफिकल्ट टू गेट एंड blah blah blah, है ना? A flight slot is the authorization to either land or take off at a particular airport and you are facing difficulties. So strategic issues कौन से होते हैं ये next pre-scene में हम देखेंगे. Here I am telling you the issues. I only want you to रीड द डेटा. बार 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 उसको रीड करना है एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट टू मी. थिंक ऑफ इट लाइक अ कॉलेज असाइनमेंट जहां पे यू हैव टू बिल्ड ऑन दैट. अवॉइड यूजिंग चैट जीपीटी. जस्ट लिसन टू दिस, डोंट यूज चैट जीपीटी. ठीक है. देन वी रेड दैट देर आर सर्टन टेक्नोलॉजी रिलेटेड थ्रेट्स ऑल्सो, है ना? ऊपर एकदम देखा था. जियोपॉलिटिकल इश्यूज कहाँ पे था अपना? पढ़ा था ना कहीं पे जियोपॉलिटिकल इश्यूज? हाँ, ये cyber attack, terror attack, all of that. Now, this company has a very good digital capability. So, tech issues and cyber attacks. ठीक है. Then, sustainability and sustainability issues. क्यों sustainability issues? क्योंकि इसके सारे कस्टमर्स दे आर लाइक, अरे कार्बन फुटप्रिंट कम करो, ये कम करो, वो कम करो. दे आर सेइंग ऑल ऑफ दैट. ठीक है. सो think about what those challenges are, कितना परसेंट emission हो रहा है, and carbon offsets, and just do all of that analysis. Then I want you to do an analysis of
रेवेन्यू मिक्स। ठीक है। अब ये हो गया आपका आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटेजिक इश्यूज। ठीक है। फोर्थ एनालिसिस दैट आई वांट, नाउ आई विल बी गिविंग यू सम मॉडल्स। ठीक है। ये मॉडल्स ना ऑलमोस्ट सारे पेपर्स में आ ही जाते हैं, तो व्हेन यू वंडर ना कि अरे सर वी डोंट नो विच मॉडल टू अप्लाई, अरे घूम फिर के 10 तो मॉडल है, वही वही अप्लाई करने हैं, कौन सा दिमाग लगाना है उसमें। और सब एकदम बच्चों वाले मॉडल्स है। ठीक है। आई वॉन्ट यू टू अप्लाई पेस्टल, कैन यू डू दैट? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल। ठीक है। आई वॉन्ट यू टू डू पेस्टल एनालिसिस इन दिस केस। और ओपन करो ना अपना स्टडी हब, नो बडी इज स्टॉपिंग यू, ओपन द स्टडी हब। स्वॉट मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है। ठीक है। देन आई वॉन्ट यू टू डू, ये हर चीज में होता है, हाँ। पोर्ट हर एग्जाम में आता है ये। पोर्टर्स 5 फोर्सेस तो मतलब इज लाइक लाइफ लाइन ऑफ एसबीएल। ठीक है। ये करो। देन व्हाट आई वांट, स्वॉट तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था, डू स्वॉट एनालिसिस फॉर द कंपनी। देन डू यू रिमेम्बर, आपने वीडियो देखा है VRIO वाला? व्हाट इज VRIO? पर VRIN वाला देख थिंक। चलो बताओ, व्हाट इज वी? वैल्यूएबल है ना। देन रेयर, देन इमिटेबल। सो बेसिकली आई वांट यू टू डू द VRIN एनालिसिस हियर, वो मॉडल लगाओ। देन डू यू रिमेम्बर द आंसॉफ मैट्रिक्स? देखा है आपने? क्या? देखा होगा ना, वीडियो बनाया है ना। हाँ सर देखा है। कुछ नहीं देखा किसी ने। हैंड्स ऑफ। ठीक है। देन हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन FM और AFM? अच्छा, इफ यू रिमेंबर, around 3 weeks ago I had sent one video in which I told you this is a video for APM but I want you to watch it. उसमें मैंने सारे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टेक्निक्स क्विकली डिस्कस किए थे। उसमें सेंसिटिविटी एनालिसिस है। तो वो सेंसिटिविटी एनालिसिस, सी नंबर वंबर तो कैलकुलेट करना नहीं है, बट जस्ट लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो। ओपन द वीडियो, नो प्रॉब्लम, देख देख के करो। नाउ एक फेवरेट मॉडल जो हर पेपर में लगता ही लगता है इज मेंडेलोज मैट्रिक्स। राइट? आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स। सो मे बी मेंडेलोज मैट्रिक्स लगाने से पहले आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब each stakeholder group. Employees could be a stakeholder, government could be a stakeholder, regulatory body could be a stakeholder, anybody could be a stakeholder. Do that. ठीक है? Okay. Now, this is one area that I want you to actually dive in deeper. जितने भी एंगल से आप इसको एनालाइज कर सकते हो इतना करो। ठीक है। उसके बाद देर इज वन मोर एक्टिविटी दैट, सी मेरा पेस्टल पूरा रेडी है, हाँ। मेरा रेडी है पेस्टल, बट मैं अभी आपको दिखाऊंगा नहीं, वरना आप अपना दिमाग कब लगाओगे ना, अभी 20 ही दिन बचा है, तो अभी तो अपना दिमाग लगाना चाहिए हमने। तो ये मेंडेलोज आप करेंगे। ठीक है। स्वॉट भी जितना डिटेल में जा सकते हो ना जाओ, नो बडी इज स्टॉपिंग यू, गो इन एज मच डिटेल एज यू कैन। ठीक है। अच्छा, एक और चीज वी कैन डू, चलो ये अभी मत करो, नॉट रिक्वायर्ड। देन अच्छा, आई वॉन्ट यू टू मेक अ रिस्क रजिस्टर। ठीक है। ये भी हर पेपर में बनेगा, रिस्क रजिस्टर। What are the columns that I want you to make? Risk category, then risk. पेपर में nobody asks you to make a risk register ना, बट आपको पता होना चाहिए। Then likelihood, then impact, then
Is there an existing control? Then responsibility किसका है? Who is the process owner? Then recommendation. ठीक है। और जो भी रिस्क यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है, स्टार्ट विद दोज। इफ यू फाइंड अदर रिस्क, ग्रेट। इफ यू डोंट फाइंड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक्टिविटी आपको करना है। ओ, वन मोर थिंग, एक और टास्क है आपके लिए। व्हाट इज दैट? एनालिसिस 6, चेक वेबसाइट एक्सट्रैक्ट्स। एंड वेबसाइट एक्सट्रैक्ट्स में आपको क्या देखना है? और ये वैल्यूज लिखा है। सी वेदर द मिशन स्टेटमेंट इज गेटिंग फुलफिल्ड, वो एक बार चेक करो। ठीक है। देन along with that, check the values and see if the mission statement is getting fulfilled and the values are being honored by the company. एक एक वैल्यू का आपको चेक करना है, ठीक है। एंड verify whether mission statement is getting fulfilled. And what else do we have to check? uh, Whether values listed on the website are being honored, ठीक है। और ये आपको डेटा देख के पता चल जाएगा। वेन यू गो थ्रू द स्टोरी यू विल गेट टू नो, ठीक है। सो डू दैट एनालिसिस। फेयर इनफ? ओके। ये 6 एनालिसिस आपको करना है। एंड आई एम गिविंग यू टुडेज डे, ऑफकोर्स आज का दिन तो चलो खत्म हो गया। यू कैन यूज टुमारोज डे एंड द डे आफ्टर टुमारो टू डू दिस एनालिसिस, ठीक है। वेंसडे इवनिंग को आई विल शो यू माई एनालिसिस ऑफ दिस डेटा। You have to check your analysis and map it against mine. How much of that were you able to achieve? And if you're not able to achieve, then of course we have time to work on that. You understood my specific expectation from you, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. अच्छे से। Do it very Yes, sir. आराम से करो। एंड आई एम टेलिंग यू, दिमाग अलग से मत लगाओ। ओपन द स्टडी हब एंड डू एवरी आइटम वन बाय वन, ठीक है। ओपन द स्टडी हब, डू एवरी सिंगल आइटम वन बाय वन, and refer as many sources as you can, but try to make it comprehensive. Remember one thing, you will not go beyond the confines of the data given here. अच्छा, let's do one more activity. आप ये एनालिसिस करके मुझे भेजो, ठीक है। मैं वो एनालिसिस आपका चेक करके आपको फीडबैक देता हूं कि हैव यू स्टक टू द डेटा गिवन और हैव यू गॉन ओवरबोर्ड। तो वो जो आपका प्रॉब्लम है ना लाइफ में कि सर आई ओवर एक्सप्लेन एवरीथिंग, उसको सॉल्व करते हैं पहले। बट इफ यू वांट दैट टू हैपन यू हैव टू सेंड इट टू मी बाय वेंसडे आफ्टरनून 1 PM तक आपको मुझे भेजना पड़ेगा। ओनली देन आई विल बी एबल टू चेक। कर सकते हैं उतना, टू सी वेदर Yes, sir. Yes, sir. do that. Yes. If you are able to send me before 1 PM, I can check it. Otherwise, फिर I will not have enough time to go through so many submissions. Just 1 second. When you do this now, think about one more aspect. When you do this analysis, ये check करो कि आपको स्टडी हब कहाँ कहाँ पे देखना पड़ रहा है, and how much of this analysis can you do only on the basis of pre-seen. Just, and that's not for me, that's for yourself. Can you do that? Perfect. चलो, Yes, sir. आई विल सी यू ऑन वेंसडे, और वेंसडे से फिर लगातार आई विल सी यू टिल 30th of November. ओके, चलो। एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। मैं आपको पूरा एकदम डे 1 पे मैं सब नहीं बता रहा हूं। पहले आपको प्री सीन के साथ अलाइन करते हैं, फिर आपके दिमाग में एनालिसिस कैसे करना है वो फिट करते हैं।
देन आई वॉन्ट टू कीप अ चेक ऑन योर एबिलिटी टू गो बियॉन्ड। वो जो आप हर जगह पे अपना एक फ्लेवर डालते हो ना, वो मुझे रोकना है। तो लेट्स फोकस ऑन दैट फर्स्ट। आंसर लिखना बाद में, पहले क्वेश्चन पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अभी तक बाय द वे हमने एग्जिबिट्स देखा भी नहीं है। आई हैव नॉट इवन शोन यू द एग्जिबिट। फिर उस पे जाएंगे, फिर क्वेश्चन कैसे पढ़ना है। अभी तो हम इंफॉर्मेशन कैसे पढ़ना है वो समझ रहे हैं, फिर हम समझेंगे क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, फिर हम जाएंगे आंसर कैसे लिखना है उस पे। सो इट्स अ स्टेप वाइज प्रोसेस। ठीक है। You can explain it in bullet points, you can go in full detail, whatever you wish. Just don't spare any detail. सब कवर करो, जो इनफैक्ट ना करो सब कवर, सो दैट आई कैन स्टॉप यू फ्रॉम ओवर एक्सप्लेनिंग। थिंक ऑफ इट एज अ कॉलेज असाइनमेंट, थिंक ऑफ इट लाइक अ अनसीन पैसेज दैट यू हैव सीन एंड सेंड मी द एनालिसिस। ठीक है। वर्क्स। Yes, sir. परफेक्ट। So, Okay, sir. hello, sir. यस, टेल मी। In what extent we have to write the answer? Like we have to criticize it or we have to describe it? जस्ट एनालिसिस। आई हैव नॉट आस्क्ड यू टू क्रिटिसाइज इट। मैंने क्या बोला है? मैंने बोला आप एनालाइज करो, स्वॉट एनालिसिस करो। तो स्ट्रेंथ, Okay. थ्रेट, स्ट्रेंथ लिखो, वीकनेस लिखो, सिचुए मतलब कंपनी के अपॉर्चुनिटीज लिखो, डू दैट। देर इज नो क्रिटिसाइज, देर इज नथिंग, द वर्ड इज एनालाइज। ठीक है। ओपिनियन पे भी मत देना। डोंट गिव एन ओपिनियन ऑन एनीथिंग, आई डोंट वांट यू टू डू दैट। जस्ट एनालाइज द डेटा। वर्क्स। Yes, sir. Perfect. Chalo. I'll see you on Wednesday. Do your homework properly. And small request, no big request. Whenever you send any sheet to me, please उसको नाम दो SBL एनालिसिस कोरजेट्स श्रेया whatever। आप SBL एनालिसिस भेजोगे, मेरे पास 100 फाइल आएंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा फाइल किसका है? फिर मेरे लैपटॉप में SBL एनालिसिस नाम के 100 शीट हो जाते हैं ना, डोंट डू दैट। ठीक है। चलो। Sir, do we email it to you? WhatsApp, email, whatever you want. Okay, perfect. Just, by the way, very clear instruction. You will not send me screenshots. You will type it out in Excel and I want the Excel sheet or the Word file. मुझे यहाँ वहाँ के screenshots चेक करने में, हैंड रिटन चीज में चेक नहीं करूंगा। ठीक है। बिकॉज हैंड रिटन थिंग इज नॉट यूजफुल इन द पेपर ऑल्सो, एंड मुझे नहीं होता है हैंड रिटन चेकिंग। ठीक है। एक्सेल शीट और वर्ड फाइल, वॉट एवर। ठीक है। ओके। चलो। थैंक यू। Okay, sir. Thank you, sir. Thank Thank you. you.